Yes. Atul bhai, please begin. રેવા લોજ વડોદરા, રોહિત લોજ અમદાવાદ અને જ્યોતિ લોજ મુંબઈના ઉપક્રમે આયોજિત ત્રિવેણી મંગળવાર મીટના મદ્રાસ ફેડરેશન, મરાઠી ફેડરેશન, ગુજરાત ફેડરેશન અને મુંબઈ ફેડરેશનના આજના પ્રવચન શૂન્ય મર્યાદા પુસ્તકનું એક સંક્ષિપ્ત અભ્યાસના વક્તા ગોમથીજી, મંજુષા વાનખેડેજી અને શ્રી હર્ષવર્ધનભાઈ શેઠ તેમજ આજની સભાના મોડરેટર શ્રી તરલભાઈ મુનશી અને આજની સભામાં હાજર સર્વ સભ્યોનું સ્વાગત કરું છું. કેશવરબેન દસ્તુર વૈશ્વિક પ્રાર્થનાથી આજની સભાની શરૂઆત કરાવશે. કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. Oh, hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, Shanti, Shanti. શ્રી તરલભાઈ મુનશીને આજની સભાની આગળની કાર્યો માટે આમંત્રિત કરું છું. શ્રી તરલભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. नमस्कार सभी को। और आज की लिमिट है 0 लिमिट और गोमती जी बहुत ही शानदार विषय लेकर आई हैं। विशेष अनुरोध दोनों जो वक्ता लैंग्वेज ट्रांसलेट कर रहे हैं, आदरणीय हर्षवर्धन जी और मंजूषा जी, के समय सीमा का आप ध्यान रखिएगा। पर मैं 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा देता हूं क्योंकि विषय इतना बढ़िया है कि शायद उसको आप जितना सम्मिलित छोटा करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। साथ ही तीनों वक्ताओं को यह भी कहता हूं कि जो वो एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जैसे गोमती जी, एक बहुत बढ़िया चीज आपको जब तीनों वक्ता खत्म हो जाएंगे उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि वो अंत में जो गोमती जी हमें 5 मिनट में बताने वाली हैं, वो अगर आपने नहीं देखा तो आप कभी भी लिमिटलेस या 0 लिमिट या इन्फिनाइट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, ये एक ऐसी कला के बारे में है जो संभव है। ज्यादा न कहते हुए मैं सीधे गोमती जी का परिचय देना चाहूंगा। गोमती जी एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हैं, गोमती राधा-कृष्णन जी। वे पोस्ट ग्रेजुएट तो हैं कॉमर्स में, पर वर्क एक्सपीरियंस उन्हें 26 साल का है। और अगर मैं कंपनियों के नाम गिनाऊंगा तो शायद कम से कम 50 कंपनियों के नाम गिनाता जाऊंगा जिससे कि वो संबंधित रही हैं। इसलिए उसको मैं दूर करते हुए मुख्य बातें बोलता हूं कि वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिशनर है और बहुत जीवन में ये प्रति उन्होंने एक अदम्य सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। लोगों के लिए उन्हें भीतर से बदलने को जो प्रेरित करता है, उनका ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो एक शांत आचरण और भावनात्मक रूप से सुसज्जित हैं और समग्र जीवन में विश्वास रखती है। अस्तित्व के सभी आयामों को, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक का वो ख्याल रखती है। उन्होंने स्कूल, कॉलेजों में और छात्रों के जीवन कौशल के लिए भी बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम दिए हैं। वे काउंसलर भी हैं और साथ में योगा इंस्ट्रक्टर। और आज हमारी मुख्य वक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें आज ज्ञान से सराबोर कर दीजिए। धन्यवाद। Thank you so much for that introduction. So I'll just start sharing my screen. Do let me know if you're able to see it. Sure. Able to see the screen sharing as well as my voice clear? Yes, everything is clear. Okay, sir. You can also go everyone. full screen if you want. Sorry? You can go full screen if you want. Okay, I'll just share the slide. No problem. We can continue. It's clear. Able to hear, able to see it properly, right? Yeah. Okay. So today we are here to, get deeper into this particular book, Zero Limits, which is very close to my heart. Welcome, friends, to this presentation of this particular book, written by Joevitale and Dr.HEW LEN, the person who we will be talking about more in detail in this book.
So Dr. Joseph Vitale, he himself is a spiritual teacher, and he has also authored the book called The Attractor Factor. Apart from that, he does a lot of humanitarian activities in the US, taking care of the mental as well as the financial assistance that he imparts through his humanitarian group. And he has also acted in the movie The Secret, played an important part in that particular movie. So this is Joseph Vitale for you, who has been very instrumental in getting to know Dr. HEW LEN before writing this book. So going further, yeah, so hooponopono. So this technique, that is, it is also called the Hawaiian technique of healing. And it is also called a technique for problem solving. And ho means to make. Hooponopono means right. So how do we make things right for ourselves? And the founder member of Hooponopono is MORRNAH. You see her on the left-hand side of this picture. She was born in the year 1913 and she lived up till 1992. So Dr. HEW LEN, who is himself a psychiatrist and he holds a PhD in psychology as well, he was a practicing doctor in the US. And he came in touch with MORRNAH and the Hooponopono technique in the year 1982. And he associated with her for 10 long years, till the time she passed away. So during that time, those 10 years, he learned every detail of this particular Hawaiian technique of healing, and he fell in love with the technique. And of course, he was a practicing psychiatrist at that point of time. And in the year 1984, Dr. HEW LEN was called on to treat hardcore criminals in a mental asylum at Hawaii. And Dr. HEW LEN, after coming in contact with MORRNAH, who was the founder of Hooponopono, he wanted to use this particular technique for healing the patients, the hardcore criminals that they were. They were murderers, they were rapists, they were so violent. They would be violent not only towards others, but also they used to do a lot of self-harm. So in that particular hospital where they were housed, people in the hospital, the staff of that hospital, they used to keep their backs towards the wall, when they were passing through the passage. And these criminals, they were shackled, they were chained, so that everyone in that hospital, everybody else in that hospital was safe and secure. So such was the condition. There were many doctors who came, who saw, who treated, but they gave up and they went away. And in the process, there were a lot of nurses and the staff who quit their jobs and they left because unable to manage these hardcore criminals who were housed in that particular mental asylum. The entire ward, one particular ward was completely for them. And in this particular situation, the hospital management, they called in Dr. HEW LEN. And why I got interested was because of this particular story of Dr. HEW LEN's treatment of the inmates of that asylum. So Dr. HEW LEN said, first condition is that I will not see any of these patients physically. And number two, he said, I will not treat them with any medication whatsoever. So these two things was something that was very mind-blowing. How can a doctor treat a patient without seeing them, without physically meeting them? And psychiatric doctors, we know they prescribe a lot of medication, and this particular doctor says no medication, absolutely. So how did he treat? And that became, a cause of contention for everybody in that hospital. So he called for all the files of these patients. And this happened way back in the year 1984. And as he saw the files, and so it was like trying to know, everybody wanted to know, how did Dr. HEW LEN treat the patients? And in a matter of 4 years, in the course of the healing process, the entire ward of that hospital closed down. All the inmates of the asylum, they returned to their normal duties.
and they became better and better, and people started coming into the hospital in search of jobs, and absolutely the hospital became like any other normal hospital. So that was very intriguing, isn't it? So I also got interested, actually this was introduced to me by my husband, who attended a hooponopono program, and he told me, and I explored deeply into the subject. And this is what I came to know, how Dr. HEW LEN treated those inmates of the asylum. Violent, chained, such hardcore criminals. So what is this technique of hooponopono? We will learn more in detail as to how Dr. HEW LEN treated the patients of the mental asylum. Now, before that, we will get into a little bit of understanding as to what, the famous personalities. Dr. Albert Einstein, he himself is the greatest scientist of our century. He says we are part of the whole, which we call the universe. But it is an optical delusion of our mind that we think we are separate. This separateness is like a prison for us. Our job is to widen the circle of our compassion so we feel connected with all people and situations. And when we speak about the founder, I'll just go a little bit behind, MORRNAH, she imbibed the divine creator, how she treated the exercise of hooponopono. She imbibed the divine creator to heal, everyone, whomever she came across with a problem, and taking into consideration, even theosophy believes in reincarnation and the karma angle, right? So this becomes very easy for theosophists like us to understand even deeper. So she believed in reincarnation as well as the karma aspect of the universe. And she imbibed the divine. She, in fact, invited the divine power, the divinity, to interfere, the divine intervention, the divine interference to heal whomever she came across. So this is what even Dr. HEW LEN did. What Dr. HEW LEN actually did was, he did not treat the patients of the asylum. He believed, like we said now, we are all part of the whole. So at the physical realm, we are all different. In the, our mental thinking is also very different. At the emotional level, we are all different. But at the spiritual realm, he realized we are all one. All of us are one. I am in you, you are in me. And when there is a problem in the outside world, it means automatically he realized, Dr. HEW LEN said, I have a problem within me. That is what he started treating himself. He started healing himself, by virtue of which he saw the changes in those patients in the asylum. And that is how, by healing himself, he healed the patients in that asylum. This may sound to be quite skeptical, as even Joevitale, when he read the book, if you get a hand at the book, please get that book and read it. In the first half of the book, he himself is so skeptical. Two things can happen. One is that we can feel inspired by reading the book. Another thing, some of us will become very skeptical. In fact, when I read the book for the first time, I was also like, how can this be? How can this become a reality? How can I believe this? Like when there is a problem outside, it means that there is a problem inside. It took a lot of time for me also to understand, getting deeper into, and that is how, when I got into theosophy also, when Vimal introduced me to theosophy, that also helped me in getting the crux of what is there in this particular book also. Now, that is how Dr. HEW LEN treated. He did not treat those patients at all. He read the file. He understood that, what they are going through in their life. He understood that we operate in two ways. One is we operate through our memory. And second is we operate through our inspirations. So when there are certain memories, which are the programming in our memory, if there is an error in the programming in our memory, that is where the problem comes. And he recognized that, and he understood that if there is a problem outside, there is a problem inside also, inside me also. And he started healing himself, by virtue of which he saw tremendous changes happening in the patients of that mental asylum.
they also started healing slowly, slowly, slowly. He saw that change. As he healed himself, he healed the patients also. And that is how they got healed, they got treated, they got cured, and they left the asylum and started doing their regular work. Going further, hooponopono. So he says, why is this important to keep cleaning? It is very important to keep cleaning. He says, this is what he calls the hooponopono process itself. He calls it as cleaning. And he says that the very purpose of our existence is to clean only. So how do we clean? Why do we clean? He says, because we are part of a whole. So we are all divine particles. Maybe the divinity is there in the universe, the whole divinity is there, and we are all small, 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 small particles of the divine. So inside each one of us, he recognized that there is some divine power. All of us have got that divine power. So how do we manifest that? That is exactly why he says that we need to practice hooponopono, which is nothing but the cleaning and the cleansing exercise. And how do we do it? Very simple and profound technique that he has taught us, which we will see in a few moments from now. So before that, suppose we want to erase some of the files from our computer. Where do they all go and settle down? In the recycle bin, isn't it? We all know that. And as human beings, where does all our files, when we are erasing our files, where do they all go and settle down? It goes and settles down in our subconscious mind. And that is what we call it as memory. So memory is nothing but our own subconscious mind, is what he says. And he talks about the interesting facts about the subconscious mind, which is our recycle bin. All the erased memories, all the deleted files from our mind, from all that is existing in between these 2 years, they all go and settle down in our own subconscious mind, which is our memory. So the interesting facts about the subconscious mind, he says, is it records everything. Everything, not leaving even a single thing, it records. Always alert and awake. We are not aware, but our subconscious is always alert and awake. He says it controls 95% of our lives. It is built on habituation. That is the patterns that we have, the habits that we form, the emotional habits that we have are all there because of the functioning of this subconscious mind. It speaks to you in dreams also. So even when we are sleeping, our subconscious is always awake. It has no verbal language as such. It takes everything literally. So very important point to note over here. It does not try to understand or it does not try to decipher. Whatever you give it, it will just take it per se. It can do trillion things at once. And it is not logical. It is not rational at all. It is the feeling mind. And it is 1 million times powerful than the conscious mind. So at the surface level, all of us operate through our conscious mind. What is happening in the subconscious mind, we have absolutely no clue. So that is why he says it is very important for us to take care of the subconscious mind. Although we are not aware as to what is happening, that is why cleaning becomes very important. Just as we take our bath for the physical body with soap and water, we clean the physical body every day with soap and water. Similarly, he says that it is much more important to clean our subconscious mind every day, because everything is recorded over here. Even if we say that, all the thoughts get generated in our subconscious mind and we imbibe a lot of, negativity that goes and settles down in our subconscious mind. So we may not be aware. So probably when we are deleting the files in the computer, it may be out of sight, but it is still there in the computer, isn't it? Probably it is out of our sight. Similarly, in our mind, wherever we are trying to erase, or we say that we have tried so many, methods of erasing some unwanted files, unpleasant files from our memory, still it gets recorded in our subconscious. Maybe it is out of sight for the moment, but it is always there in our subconscious because that subconscious records everything. It is always there. And a little trigger is enough for us to
go back probably even 50 years and recollect what happened at that point of time. So a small trigger is enough. So how do we take care of this subconscious mind? It's the crux of the book. Going further, he further says in the book, our brain processes 14 million bits of information per second, whereas our conscious mind is aware of only 11 to 15 bits of information per second, is what he says. Now just imagine the percentage. So what we think that we know is only a minuscule 0.0000000 point, or probably 1%, is what our conscious mind can actually process. Whereas maximum what we cannot process is there in our subconscious mind. So the subconscious mind is 95%, whereas our conscious mind is only 5%. We are conscious of only 5% of what is happening around us, or even what is happening within us. We are not aware of most of the things. And he goes on to say there are 100 trillion cells in the human body, and each of those cells has 100 trillion atoms. So you can just imagine the potential of the human mind is what he is trying to make us understand. So what we think we actually know about ourselves or about the world, in fact, we hardly know anything, is what he is trying to explain to us in that book. We simply cannot process more than 11 to 15 bits of information, per second. And the amount of information that the brain processes, he says, is 14 million bits per second. So in fact, this was a great realization for me, because then I understood that I don't know anything. I realized that I absolutely don't know anything of what is happening, whether within me or without me, outside me. That was a great realization for me. And then as we proceed further, the mind's limitless power he talks about. So your conscious mind controls brain activity just 5% of the day. Your unconscious mind controls brain activity and your thoughts 95% of the day. And your thoughts, whatever worries and troubles you, controls you. So we are in absolute control unknowingly from our subconscious mind. It is the subconscious mind that is actually controlling us. Thoughts become things. He says you are confined only by the dominant negative thoughts of our brain. That little voice inside your head that says, I can't do this, is not your friend. So he's trying to make us understand that the subconscious mind is not our friend. That is why we really need to clean and cleanse the subconscious mind and make it zero. When we make it zero, that is the zero state, that is where inspiration enters, he says. So we want that divine interference. We want that divine intervention. We want that divine inspiration. So for that, the only formula, he says, is clear your subconscious. And hooponopono is the technique, he says, for cleaning and cleansing our subconscious mind, which is very important for us. And you have 70,000 thoughts per day, and we have absolutely no control over our thoughts. And your brain is constantly developing. It continues to develop neurons, new neurons. Every single day, it keeps on developing new neurons. And that is the positive aspect of our brain function. Going further, so the next one. This is again what we said about the conscious and the subconscious. Rationalization, the conscious mind can rationalize. Okay, I want this, I don't want this. I like this, I don't like this. Likes, dislikes, wants, needs, everything, the conscious mind can rationalize at the surface level. Then the conscious mind is also about the willpower, that we will, yes, I want to do this, and I take a decision, I do this. That is part of the subconscious mind. The conscious mind is a short-term memory. It does not have long-term memory. Long-term memory is a characteristic of the subconscious mind. Conscious mind plans, it organizes, and probably it even executes. All that the conscious mind can do.
critical thinking also, the certain decisions that we take consciously, part of the conscious mind functioning. Decisions, judgment, all that we do, all that is the function of the conscious mind. That is just at the surface level. But the subconscious mind is much deeper. The long-term memory is the characteristic of the subconscious mind. All our emotions, all emotions are deep-rooted ones. The patterns, the habits that we have formed, by these emotions, they are all part of the subconscious mind. The memory that we form through our emotions. Creativity is a function of the subconscious mind. That is the right brain activity. And of course, the habits or the patterns that we develop are again of the subconscious mind. Yeah. So with that, we come to the end of the slide 8. So now we will go for the translation. Yeah. And I will straight away introduce Manjusha ji, जो आज मराठी में हमारे साथ ट्रांसलेशन करने वाली है. मंजूषा वानखेड़े जी एमकॉम है, MBA है, PhD है और श्री कृष्ण थियोसॉफिकल लॉज अमरावती से जुड़ी हुई हैं सन 2002 से. वैसे ये तो एक साल है, बाकी वो डॉटर इन लॉ हैं मधुकर वानखेड़े जी की, जो कि बहुत ही सीनियर मोस्ट मेंबर हैं थियोसॉफी के. तो एक थियोसॉफी परिवार में ही हैं और इस वक्त वो एक लेक्चरर की तरह श्री शिवाजी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अमरावती में पढ़ा रही हैं और आज हमें इस विषय से पढ़ाएंगी. आपके पास करीब 10 मिनट का समय है. आइए और मराठी में आप हमें बताइए. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आज आपण शून्य मर्यादा या पुस्तकावर संक्षिप्त अभ्यास करणार आहोत. त्याचा आता आपण स्लाइड्स ज्या बघितलेल्या आहेत त्याचंच मी थोडंसं डिस्क्रिप्शन मराठीमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना देणार आहे. त्यामध्ये जे सांगितलेलं आहे की जोसेफ विटाले यांचा जन्म 29 डिसेंबर 1953 साली झाला आणि हे एक आध्यात्मिक शिक्षक होते ज्यांनी द सिक्रेट या चित्रपटामध्ये काम केलं होतं आणि द अट्रॅक्टर फॅक्टर्स चे एक प्रसिद्ध लेखक म्हणून ते उदयास आले होते. ते सध्या ऑस्टिन टेक्सास मध्ये राहतात आणि त्यांनी अमेरिकेतील बेघरांना संपवण्यासाठी किंवा त्यांचं पूर्ण पालन पोषण करण्यासाठी मानसिक आणि आर्थिक मदत देणारे बरेच असे मानवतावादी कार्य केलेली आहेत. होपोनोपोनोच्या या उपचार तंत्राची स्थापना मॉर्नाने यांनी केली होती आणि तिने प्रथम जर्मनीमध्ये आणि नंतर हवाई आणि US मध्ये शिकवण्यास सुरुवात केली होती. हवाईयन परंपराचे संयोजन, दैवी निर्मात्याला प्रार्थना करणे आणि पुनर्जन्म आणि कर्माशी जोडलेल्या समस्यांमुळे एक अद्वितीय नवीन समस्या सोडवण्याची एक प्रक्रिया समोर आली. डॉक्टर ह्यू लेन ज्यांचा जन्म 1939 रोजी झाला आणि मृत्यू 2022 साली झाले, त्यांनी मानसशास्त्रात PhD केली होती आणि 1982 मध्ये उपचार करणाऱ्या मॉर्नाहला भेटले आणि त्यांच्यासोबत त्यांनी जवळपास 10 वर्ष काम केलं आणि त्या काळात त्यांनी होपोनोपोला तंत्र पूर्णपणे शिकून घेतले आणि मानवतेच्या फायद्यासाठी सराव करण्याची त्यांनी सुरुवात केली. एकही रुग्ण न बघता डॉक्टर ह्यू लेननी हवाई राज्य रुग्णालयाच्या गुन्हेगारी क्षेत्रातल्या वेड्या वॉर्डमध्ये प्रत्येक रुग्णाला त्यांनी बरे केले. आता हे थोडसे आपल्याला वेडेपणाचे वाटू शकते, पण जेव्हा आपण ती खरोखर ती पूर्ण स्टोरी बघू दॅट टाइम आपल्याला समजेल की हे किती खरे आहे. डॉक्टर लेन यांनी त्यांच्या रुग्णांच्या फाईल्सचे पुनरावलोकन करण्यासाठी हॉस्पिटलमध्ये एक कार्यालय स्थापन केले, म्हणजे एक ऑफिस स्थापन केले त्या ठिकाणी आणि ते या फाईली पाहत असताना त्यांनी दुसऱ्यांवर कार्य न करता ते स्वतःवर काम करायला लागले आणि त्या स्वतःवर काम करता करता हे जे रुग्ण होते ते सगळेच्या सगळे पूर्णपणे बरे झाले. आता हे थोडंसं विचित्रपणाचंच वाटत आहे, पण तरी याशिवाय त्या ठिकाणी जे कर्मचारी काम करत होते तर ते काम सोडून जात होते की आम्हाला इथे काम करायचं नाही, जे काय त्रास होत असेल ते. पण हळूहळू या कार्यामुळे ते सुद्धा वापस यायला लागले आणि त्यांनी पण काम जॉईन केलं परत वापस. हे सर्व साध्य करण्यासाठी त्याने होपोनोपोनो या प्रसिद्ध हवाईयन उपचार आणि शुद्धीकरण पद्धतीचा वापर केला होता. हे स्वतःवर प्रेम करून उपचार करण्यावर
हे तंत्र आधारित आहे. प्रत्येक फाईलचे स्वतंत्रपणे पुनरावलोकन करताना डॉक्टर लेननने आय लव्ह यू आणि मला माफ करा या शब्दांची पुनरावृत्ती केली, म्हणजे परत परत ते शब्द उच्चारले. काही महिन्यानंतर बेड्या घातलेल्या रुग्णांना मोकळेपणाने पण फिरण्याची सुविधा देण्यात आली. अनेकांना या विलक्षण कथेबद्दल अनेक उत्सुकता होती आणि काही जण जी प्रकरणे होती ती तर एकदम हताश झालेली होती की आता हे ठीकच होऊ शकत नाही. इवन ते सुद्धा ठीक झाले त्याच्यामुळे आणि परत ते समाजात वावरू लागले. परंतु या ज्या तंत्राबद्दल आहे ही फारच कमी माहिती सगळ्यांना उपलब्ध होती. मग डॉक्टर जोविटाले नावाच्या त्या माणसाने सर्वाधिक विक्री होणारे लेखक आणि वैयक्तिक विकास गुरु असं आपण त्यांना म्हणू शकतो, त्यांनी या कथेला पकडून धरले आणि त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांच्याकडून प्रथम शिकण्यास सुरुवात केली. डॉक्टर विटाले यांना लवकरच कळले की डॉक्टर विटाले यांना लवकरच कळले की डॉक्टर लेन हे होओपोनोपोनोच्या या प्राचीन हवाईन पद्धतीचे प्रमुख शिक्षक आहेत. त्यांना हे कळले की या प्रभावी, शक्तिशाली, क्षमा आणि मुक्त करण्याची ही प्रक्रिया वापरून एखादी व्यक्ती तुमच्या मनातील अवचेतन अवस्थेपासून मुक्त होण्यास सक्षम आहे, जेणेकरून नशीब आणि इच्छा तुमच्यावर नियंत्रण ठेवू शकेल आणि तुम्हाला जीवनातून खरोखर जे हवे आहे ते मिळवण्यास ते मदत करते. हे नकळतपणे स्वीकारलेल्या विश्वास, विचार आणि तुम्हाला माहित नसलेल्या आठवणी तुम्हाला मागे ठेवत आहेत. त्यांच्या सहकार्यामुळे अखेरीस झिरो लिमिट्स हे सहलेखक पुस्तक आले, ज्यात त्यांनी पूर्ण हा प्रवास लिहिलेला आहे. चेतन मनाची, जबाबदाराची आणि कार्य म्हणजे साफसफाईची सुरुवात करते. ज्या ठिकाणी क्लिनिंग सगळं प्रकार होतात तिथे सुप्त मनाची काळजी घेण्यात येते. त्याला शुद्धीकरण प्रक्रिया शिकवणे आणि देवत्वाला दिशा मागणे, अवचेतनामध्ये कोणत्या आठवणी रिप्ले होत आहे याबद्दल जागरूक मन अनभिज्ञ हे असते. केवळ दैवी प्रेम विषारी स्मृतींना शुद्ध ऊर्जेमध्ये स्थानांतरित करू शकते. दैवी प्रेम हेच प्रेरणा आणि ज्ञानाचे एकमेव स्रोत आहे. आता स्लाइड 3 मध्ये जे म्हटलेले आहे आपण त्या संपूर्णाचा भाग आहोत, म्हणजे आपण पूर्ण एक होल युनिव्हर्सचा आपण एक पार्ट आहोत, ज्याला आपण विश्व म्हणतो. परंतु आपण वेगळे आहोत असे आपल्याला वाटते, हा आपल्या मनाचा एक प्रकाशमय भ्रम आहे. आपण वेगळं नाही तर आपण पूर्ण त्या प्रकाशमय संपूर्ण याचा एक भाग आहोत. हे वेगळेपण आमच्यासाठी एक तुरुंग आहे. जर आपण वेगळे म्हणू स्वतःला तर ते आपल्यासाठी एक जेल, एक तुरुंग आपण म्हणू शकतो. आमचे कार्य आमच्या करुणेचे वर्तुळ विस्तृत करणे आहे. त्यामुळे आम्हाला वाटते सर्व लोक आणि परिस्थितींशी ते जोडलेले आहेत. स्लाइड 4 मध्ये सांगितलेलं आहे हो याचा अर्थ आहे मेक आणि ओपोनोपोनोचा अर्थ आहे बरोबर. तर थोडक्यात हो ओपोनोपोनो म्हणजेच आठवणीमधील त्रुटी ते योग्य करणे. डॉक्टर ह्यूलेन यांचा विश्वास आहे की विश्वातील प्रत्येक जी गोष्ट बनलेली आहे ती ऊर्जेने बनलेली आहे. त्यामुळे ऊर्जेच्या पातळीवर आपण सर्वजण संपूर्ण भाग आहोत. आपण सर्व स्पंदनशील ऊर्जा आहोत आणि आपण सर्व एक आहोत. या ऊर्जेला आपण प्रकाश आणि आत्मा किंवा देवत्व म्हणू शकतो, कारण आपण या सर्वांचाच अंश आहोत. मी तुझ्यात आहे, तू माझ्यात आहेस. अवचेतन जे मन असतं ते सतत स्वच्छ करणे हे फार महत्वाचे असते. स्लाइड 5 मध्ये जे सांगितलेलं आहे की जेव्हा आपण आपल्या संगणकातील फाईल्स मिटवतो, आता कम्प्युटर सगळेजण वापरतात त्याच्यामुळे सगळ्यांना माहिती आहे की जेव्हा आपण त्या फाईल्स डिलीट करतो तर त्या फाईल्स कुठे जातात, त्या जातात रिसायकल बिन मध्ये. मग तो अजूनही ते पूर्णपणे बाहेर जातात का, नाही तर त्या अजूनही त्याच ठिकाणी असतात. तसंच आमच्या आठवणी पण अशाच असतात, त्या जातात म्हणजे त्या काही काळापुरत्या आपल्या माइंड मधून बाहेर निघतात, पण त्या तिथेच असतात. त्या आपल्या सुप्त मनाने स्थिरावलेल्या असतात. ते अजूनही आपल्यात आहे पण आपल्या नजरेआड आहेत. आम्ही त्यांना पूर्णपणे आणि कायमचे पुसून टाकू इच्छितो. आता अवचेतन मनाबद्दल
काही फॅक्ट सांगण्यात आलेले आहेत, ज्यांना आपण तथ्य म्हणतो मराठीमध्ये. ते आहेत की ते सर्व काही रेकॉर्ड करते, ते नेहमी सतर्क आणि जागृत असते. कोणाबद्दल सांगतोय आपण? अवचेतन मनाबद्दल. ओके, ते आपल्या 95% आयुष्यावर नियंत्रण करत असते, कंट्रोल करत असते. ते पूर्णपणे सवयींवर बांधले गेलेले आहेत. ते स्वप्नात सुद्धा तुमच्याशी बोलतात. त्याला शाब्दिक भाषा नाही आहे, आपण जे बोलतो ती भाषा त्यांच्या ती नाही आहे. ते सर्व काही जसंच्या तसं घेते, लिटरली घेते. तो एकाच वेळी लाखो गोष्टी करू शकते. ते तार्किक नाही आहे, तर ती एक मनाची भावना आहे. ते चेतन मनापेक्षा 1 दशलक्ष पट शक्तिशाली आहे. आता 6 आणि 7 स्लाइडवर सांगितलेले आहे की तुमचे जे जागरूक मन आहे ते दिवसाच्या फक्त 5% मेंदूच्या क्रियाकलापांवर नियंत्रण ठेवते. तुमचे बेशुद्ध मन मेंदूच्या क्रियाकलापांवर आणि दिवसातील 95% तुमचे विचार नियंत्रित करत असते. तुम्ही फक्त तुमच्या भूतकाळातील नकारात्मक विचारांनीच मर्यादित आहात. मी हे करू शकत नाही असे म्हणणारा तुमच्या डोक्यातला तो छोटा आवाज तुमचा मित्र नाही आहे की मी हे करू शकत नाही. तुमच्याकडे दररोज 70,000 विचार आहेत. तुमचा मेंदू सतत विकसित होत राहतो, सतत डेव्हलप होत राहतो. तुमचा मानसिक क्रियाकलापांच्या प्रतिसादात तुमच्या आयुष्यभर एक सेकंड तुमच्या आयुष्यभर नवीन न्यूरॉन्स विकसित करणे सतत चालू राहते. चेतन मनाची काही वैशिष्ट्ये आहे की जागरूक मन कसं असते तर ते तर्कशुद्ध, इच्छाशक्तीने भरलेले, अल्पकालीन स्मृती असते, ज्याच्यामध्ये नियोजन असते, गंभीर विचार असतात, निर्णय शक्ती असते. आणि सुप्त मनामध्ये दीर्घकालीन स्मृती असते, भावना असतात आणि सर्जनशीलता असते, तसंच सवयी पण असतात काही. तर या ठिकाणी स्लाइड 8 पर्यंत आतापर्यंत आपलं डिस्कशन झालेलं आहे, ते मी मराठीमध्ये सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याबद्दल धन्यवाद. थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया रहा और आपने फटाफट स्लाइड के हिसाब से किया, वो ज़्यादा अच्छा रहा, मुझे भी समझ में आया तो बताता रहा, 1-2 जगह इकट्ठी हो गई. अब जल्दी से मैं हर्षवर्धन भाई का इंट्रो देना चाहूँगा कि हर्षवर्धन भाई तो हमारे एक तरह से स्तंभ हैं त्रिवेणी के, और उनका एजुकेशन हुआ है MA BEd में और स्पेशल इंग्लिश सब्जेक्ट के द्वारा हुआ, लेकिन तीनों भाषाएं हिंदी, गुजराती और इंग्लिश वो बहुत अच्छे से बोलते हैं. और आज के तीनों लोग एक तरह से शिक्षक हैं, तो हमें पढ़ाएंगे अच्छी तरह से. और 35 साल तक वे इंग्लिश टीचर रहे हैं. उसके बाद वो रिटायर हुए एज प्रिंसिपल की तरह. रोहित लॉज अहमदाबाद के वो प्रेसिडेंट रहे 25 साल तक, वाइस प्रेसिडेंट रहे गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के. अभी वो थियोसॉफिक ज्योति निकालते हैं, मंथली मैगजीन, जो गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन की है. और सबसे बड़ी बात कि हाल ही में वो प्रेसिडेंट चुने गए हैं गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन के और बहुत कार्य कर रहे हैं. आइए सर, समय न गवाते हुए आप हिंदी में आज समापन कीजिए. थैंक यू. नमस्कार. ये बहुत बढ़िया आज बात हुई है. सबसे पहले मैं खास गोमती जी को बधाई दे रहा हूं कि आज उन्होंने हूपोनोपोनो को लिया है, जो मेरे बहुत दिल के करीब था. जैसे सीक्रेट डॉक्ट्रिन का अभ्यास कर रहा था तो ये कुछ बातें आई और इस तरह से आ गई कि आज मुझे हिंदी में इसके बारे में जो आपने बताया उसको अनुवाद के स्वरूप यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ. जी. जोसेफ वाइटाली, जिनका जन्म 1953 में हुआ था, वो आध्यात्मिक गुरु है. और ये जो शून्य मर्यादा जो पुस्तक है जीरो लिमिट्स, ये इन्होंने दोनों ने मिलकर लिखा है. और एक सीक्रेट नाम की जो फिल्म आई उसमें जो वाइटाली ने काम भी किया. और उनकी किताब है अट्रैक्टर फैक्टर. इसके लेखक के तौर से काफी वो पहचाने गए और वर्तमान समय में वो अभी ऑस्टिन टेक्सास में रहते हैं. मानव सेवा के कार्यों में वो भली भांति कार्य कर रहे हैं और मानसिक रूप से और वित्तीय रूप से अमेरिका में जो बेघर लोग हैं उनकी समस्याओं को हल करने में मदद कर रहे हैं. अभी हूपोनोपोनो की जो दूसरी स्लाइड है उसमें एक बात सही तरीके से बताइए जिसे हीलिंग टेक्निक कहा गया है, जिसको इजाद किया था मोर्ना ने.
मोरन्ना ने सिमेओन, जिसका नाम है मोर्ना सिमेओन, जो जर्मनी में सबसे पहले वो शुरू की गई थी, बाद में हवाई टापुओं में इसका इस तरह से प्रचलन हुआ कि जो दिव्य सर्जनहार है उसकी प्रार्थना करने के लिए हवाई विस्तार में यह प्रार्थना की प्रणाली का बन गई है। पुनर्जन्म एवं कर्म के साथ जुड़े हुए प्रश्नों की पैरवी की भूमिका के कारण ही यह एक विशिष्ट प्रक्रिया ऐसे ही सामने आई। अब दूसरी एक बात यहाँ पर जुड़ गई, वो डॉक्टर ह्यू लेन की, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर ह्यू लेन, जिनका समय है 1939 से लेकर 2022 तक, अभी 2022 में उनका देहांत हुआ। वो साइकोलॉजी विषय में डॉक्टरेट हैं। वे सन 1982 में मोर्ना से मिले, 10 साल तक उनके साथ कार्य करते रहे और इसी दौरान उन्होंने हूपोनोपोनो तकनीक के बारे में वो सुपरिचित हुए और मानव जात की सेवा में इसका इन्होंने उपयोग शुरू किया, जिसमें उन्हें अकल्पित परिणाम प्राप्त हुए। ह्यू लेन ने हवाई राज्य की हॉस्पिटल में, जो वहाँ गुनाहित सजा याफ्ता जो मुजरिम होते हैं, जो पागल जैसे होते हैं, अपराधी है, उनको उन्होंने ठीक किया और वह भी उन्हें एक भी बार मिले बिना। अब यह तो कुछ पागलपन जैसा मालूम होता है, लेकिन उसका बारीकी से अध्ययन किया जाए तो यह बात अपने आप ही बहुत कुछ स्पष्ट करती है। डॉक्टर लिन ने उन मरीजों की फाइलों को उसी अस्पताल में एक कार्यालय में बैठकर उसका मुआयना शुरू किया। जब वे फाइलों को देखते थे तब उन्होंने अपने आप पर यह कार्य शुरू किया। 4 सालों में सब मरीज ठीक होते गए और इसके अलावा जो भी अस्पताल में कार्य करते थे, जो खुद बीमार हो गए थे ऐसे, और वहां से लोग भाग भी गए थे, ऐसे लोग थोड़ा समय रहते हुए वापस काम पर आए और वो प्यार से काम करने लगे। तो ये डॉक्टर लेन ने जो हवाई प्रदेश की जो दंत कथा स्वरूप बनी हुई जो हूपोनोपोनो पद्धति है, उसका पुनः स्वास्थ्य प्रदान और शुद्धिकरण हेतु उन्होंने इस्तेमाल किया। यह पद्धति या यह प्रक्रिया हीलिंग थ्रू लविंग वनसेल्फ, यानी कि किसी को भी बहुत ही प्यार करो और स्वास्थ्य प्रदान करो। डॉक्टर लेन जब भी व्यक्तिगत रूप से एक एक अपराधी की फाइल जांचते थे, तब वे आई लव यू, आई एम सॉरी शब्दों का बार बार रटन करते थे, दोहराया करते थे। थोड़े ही महीनों में जो भी अपराधी मरीजों की बेड़ियों में जिनको जकड़ कर रखा जाता था, उनकी बेड़ियों को हटा दिया गया, उन्हें घूमने दिया गया और कई मरीजों की जो दवाइयां थी वो तो देने का भी बंद कर दिया। और थोड़े ही समय में इतने निराशाजनक परिस्थिति में जो मरीज थे उनको समाज में उन्होंने वापस लौटा दिया। यानी इस पद्धति का बड़ा ही वो प्रचलित हुआ, अद्भुत कहानी बन गई और कई लोग उत्सुक हो गए, इसको जानने की वे इच्छा रखने लगे। और इस तरह एक इंसान जिसका नाम जोविटाले था, वो मशहूर लेखक था जिसके बारे में भी आपने पहले स्लाइड में देखा, तो जोसेफ विटाले वो व्यक्तिगत विकास प्रक्रिया का वो गुरु था। उन्हें डॉक्टर लेन की बातों की भनक सी लगी। उन्होंने तय किया कि वे उनके पास से ये इस प्रक्रिया को सीख लेंगे। वे तुरंत ही हवाई विस्तार की हूपोनोपोनो प्रैक्टिस, जिसके मास्टर डॉक्टर लेन है, उसकी बात से अवगत होकर इसको सीखना शुरू कर दिया। माफ करो और शुद्ध करो, इस भाव की शक्तिशाली प्रक्रिया से हर एक व्यक्ति अपनी अर्ध जागृत या अचेतन मन की ग्रथित दशा को सुधार सकता है, जिसके कारण जो नियति है या महा इच्छा की शक्ति है वह अपना स्थान लेकर आपको मदद करने हेतु आगे आती है। यह शक्ति अचेतन अवस्था में ग्रथित हुई मान्यताओं, विचारों और स्मृतियों के ढेर को हटाती है, जिसके बारे में शायद आप कुछ भी जानते भी ना हो। इन दोनों ने मिलकर बाद में संयुक्त लेखकों की हैसियत से जीरो लिमिट्स पुस्तक का सृजन किया, जो इस यात्रा की ऐतिहासिक बात है। एक शून्यनुमा खालीपन में दिव्य प्यार रहता है, जो पूर्णतया पारस्परिक संबंधों को, संपूर्ण तंदुरुस्ती को
और संपूर्ण अर्थोपार्जन यानी कि वित्तीय पूर्णता के लिए प्रेरणा देता रहता है। चेतन अवस्था यानी बुद्धि को शुद्धिकरण प्रक्रिया के लिए जवाबदेही के साथ कार्यान्वित करता है। अचेतन अवस्था को संभालता है। शुद्धिकरण प्रक्रिया में दिव्य प्यार से दिशा निर्देशन मिलता है और उसका बोध करता है। चेतन या जागृत मन में कोई विचार भटकता ही नहीं। जो भी होता है वह 1 सेकंड में 11 करोड़ जितनी स्मृतियां सबकॉन्शियस माइंड में पुनः प्रदर्शित होने की स्थिति में आ जाती है। यानी कि जागृत मन निर्विचार और अचेतन अवस्था में 1 सेकंड में 11 करोड़ स्मृतियों का पुनः प्रदर्शन वो करता है। तो इस तरह से आगे उन्होंने क्या बताया कि सिर्फ दिव्य प्रेम ही दूषित स्मृतियों को शुद्ध शक्ति में परिवर्तित कर सकता है। दिव्य प्रेम ही प्रेरणा और प्रबुद्धता का स्रोत है। चेतन मन यह सब कार्य नहीं कर सकता। अचेतन मन ही सुपर कंप्यूटर की तरह ऐसी वो चाबी है जो हूपोनोपोनो यानी शुद्धिकरण की प्रक्रिया का उसके द्वारा स्व की पहचान बनाता है। जब भी हम नींद में होते हैं तब अचेतन अवस्था में शुद्धिकरण अविरत जारी रहता है। अब तीसरी स्लाइड जो है उन्होंने बात बताई वो आइंस्टाइन की बात है, उसे मैं जरा दोहरा रहा हूं। अब तीसरी स्लाइड जरा बताइए। हम जो यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं वही, मुझे तो इतना इसका जो मैसेज है वो मिलता है। तो आइंस्टाइन तो कहते हैं कि हम पूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, परंतु हमारे मन का ऐसा दृष्टि भ्रम है कि हम अपने आप को विश्व से पृथक मानते हैं। यही पृथकता या अलगाववादिता एक कैद खाना है। हमारा कार्य है कि हम हमारी अनुकंपा का दायरा बढ़ाए ताकि हम सभी इंसानों के साथ और हर परिस्थिति में उनसे जुड़ा हुआ पाए। ये है तीसरी स्लाइड जिसमें उन्होंने अच्छी हमें आइंस्टाइन जी ने जो बताया उसकी बात बताई। अब स्लाइड जो 4 है उसमें हो का मतलब है बनाना, हो, और ओपोनोपोनो का मतलब है सही, यानी सही बनाना। यानी होपोनो का मतलब हुआ सही बनाना, जो भी श्रुतियों में भूले हैं उसे दुरुस्त करना। डॉक्टर ह्यू लेन मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसीलिए इसी ऊर्जा के स्तर से देखा जाए तो हम एक पूर्णत्व की इकाई है। हम सब ऊर्जा स्वरूप से एक ही है। इस ऊर्जा को हम प्रकाश या आत्मा या दिव्यता कह सकते हैं। मैं आप में हूं और आप मुझ में विद्यमान है, इसलिए सतत अचेतन का शुद्धिकरण होते रहना जरूरी है। स्लाइड 5 पर आएंगे। हमारे कंप्यूटर की किसी फाइल को अगर हम मिटाते हैं तो क्या होता है? वही जो रिसाइकल बिन में चली जाती है। वह कंप्यूटर में तो है लेकिन हमारी नजर में नहीं, ठीक है ना? वो बात बताइए। तो हमारी स्मृतियां भी उसी तरह है। वे जाकर अचेतन मन में निहित होती है। वे हमारे साथ होने पर भी हमसे परे है। हमें उनको संपूर्णतः मिटा देना है। चलिए अचेतन मन की कुछ और लाक्षणिकताओं के बारे में देखें। स्लाइड 6 पर आते हैं और इन्हीं लाक्षणिकताओं में स्लाइड 6 में उन्होंने जो बताया उसे हम देख ले। मन की अमर्यादित शक्ति है। आपका जागृत मन दिन भर सिर्फ 5% कार्य को निभा सकता है। आपका अचेतन मन दिन भर में 95% मगज की क्रियाएं और विचारों को नियंत्रित करता है। और आपके विचार, जो भी चिंताएं और यातनाएं हैं, वे आपको नियंत्रित करते हैं। विचारों से ही चीजें बनती है। आपके भूतकाल के नकारात्मक विचारों की आधिपत्यता में आप कैद होते हैं। जो आपके मस्तिष्क में अंदरूनी आवाज कहती है कि मैं यह कर नहीं सकता, वह आपका मित्र नहीं है। दिन भर में 70,000 विचार आप में उभरते हैं। आपका मस्तिष्क, हाँ ये ठीक है, ये स्लाइड, आपका मस्तिष्क अविरत विकसित होता रहता है। मानसिक क्रियाकलापों के कारण आपके मस्तिष्क में नए नए न्यूरॉन्स यानी उत्तेजनीय कोशिकाएं
जिंदगी भर विकसित होती रहती है। अब चलिए स्लाइड 7 पर आ जाएं, 7वीं स्लाइड पर। यह है मन की चेतन अवस्था। भौतिकता या तर्कवाद है, इच्छा शक्ति है, मर्यादित समय की याददाश्त या स्मृति है, आयोजन है, इसमें महत्वपूर्ण सोच भी है और निर्णय एवं न्याय की भी प्रक्रिया है। अब दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है चेतन मन। इसमें लंबे अरसे की स्मृति है, भावनाएं हैं, सृजनात्मकता है और आदतें भी है। अब आएंगे स्लाइड 8 पर। 8 स्लाइड में होपोनोपोनो 4 सिद्धांतों जो स्वयं शोध उन्होंने किया है उसका वो कार्य उस तरह से कर ये पार्ट सेकंड है सर, पार्ट सेकंड है ये, पार्ट सेकंड। ठीक है। थैंक तो यू आंतरिक सत्यता शारीरिक स्वरूप बनाई जाती है सर। ये पार्ट सेकंड में बाद में बोलेंगे उसके बाद। हाँ मैं समझ गया। ये मैं आपका पार्ट 1 जो यहाँ पर उन्होंने बताया, इतना मैं अभिभूत हो गया गोमती जी कि थोड़ा सा मैं आगे निकल गया हूँ, लेकिन इतना बार बार इसका मैंने उसको सुना, संवेदना प्राप्त की और मुझे पता लगा कि आज का ये विषय इतना इंटरेस्टिंग है। हर्षवर्धन भाई हम स्ट्रेट अवे गोमती जी के पास जाएंगे क्योंकि समय जा रहा है। सीधे गोमती जी शुरू कीजिए सर। या Okay, sir. I'll show the chart. Yeah. Okay. Yeah, go ahead. So now we come to the main Ho'oponopono principles. So there are 4 principles of Ho'oponopono. Self-inquiry through the 4 principles of Ho'oponopono. The first one being the inner reality becomes the physical one. That means the inner reality becomes our outer reality, and the vice versa is not true. I was also under the belief that it is my outer reality that is making my inner reality, which was a great realization for me. That things that are happening around, around me tries to influence me. It is not so. It is my inner reality that can influence the outer reality. Second one, negative thoughts creates negative reality. He also calls upon us to think about all those cancerous thoughts. He says all those thoughts will create cancerous reality for us. That is the second principle. So how do we shift from that particular thought pattern? The third one, as we know, we saw earlier, I am you, you are me. That is another principle on which the Ho'oponopono works at the universal level, at the spiritual level. We are all one. We are all having some divinity inside each one of us. We are all part of a whole. And the fourth one, taking 100% responsibility. Again, why? Because we are all part of a whole. I am in you, you are in me. So that is why these are the 4 important principles behind which the Ho'oponopono tool has been formulated. Going further, so how to use the Ho'oponopono? So what is Ho'oponopono? We said words have energy and frequency also. So we all as individuals, so everything in the universe is energy, and all energy vibrates at a certain frequency. Each one of us, we vibrate at a certain frequency. So if we are functioning from a lower frequency, then it becomes our responsibility to take our frequency to a higher level. Bring the frequency to a higher level so that we become aligned with the universe. Aligned for divine intervention. That is very important, he says. Second one, of course, taking 100% responsibility for our life. It has a very deeper meaning. In fact, I also was thinking of how I can heal myself, in the sense all of us have, in subconscious, unpleasant memories, probably traumatic experiences, which have become part of our experience. So even I too have, as a child, I was abused, now I'm 58, it was 8 years when I was 8 years, and still it is there in my subconscious. It is not completely erased. That was my realization, and I was struggling actually, how do I get rid? Because it was a part of me, right? I was feeling so impure, so unsecure. So how do I do? What do I do to deal with that? How do I make myself better, my life better? Because this was a record, it was playing, it was there in my subconscious. One trigger was enough to bring it all, bring the memories back.
So how do I take that 100% responsibility? In fact, I even tried, all the affirmation techniques, then the visualization technique, then even the scripting techniques. How do I write the problem? Then even, the body mind awareness, and so many things that I tried to follow, but they were all giving me some relief, but not permanently. It was not going out, because I wanted this to go completely and permanently out of my subconscious. So that is where I got more interested in how Dr. HEW LEN treated those inmates of those asylums who were even hardcore criminals. So if he could treat them with the technique, I thought even I can treat myself, isn't it? So that is how I got more interested in this book. And joevitale, when I said earlier, he got to know about Dr. HEW LEN only in the year 2005. So this actually, the treatment of these criminals happened way back in 1984 itself, 84 to 87, 88. But joevitale, being a US citizen, he came to know about Dr. HEW LEN 20 years after, only in the year 2005. So how to take 100% responsibility? Even joevitale in the book, he says, till the half time the book gets over, he says, I was very skeptical. I didn't know how it worked, but I simply followed the instructions given by Dr. HEW LEN. And he said, I started seeing results. So that is why even I thought, okay, maybe even I should try and maybe I can see some results, some real results that can happen to me. So I realized when I went through this book that I had to trust something inside of me, for that change to happen within me. So that is very important, I thought. And that is where he says 100% responsibility actually means, he says, that you take 100% responsibility for what you see, how you see, what you hear, how you hear, what you touch, how you touch, for all the things, for anything, for whatever you are seeking in your life and whatever you're trying to achieve in your life, take complete responsibility for everyone in the universe. So that responsibility can I take? So it may sound so difficult. That is why he says, although the technique is very simple, but yet very profound, he says it is not easy because it requires a lot of commitment from our side. So I said, okay, let me commit myself to do this and practice this. This was something that I could easily practice. So that is why he said, don't be logical. That was because it is very magical. So this is one of the techniques of the law of attraction, he says. Hooponopono is one of the techniques and tools of the law of attraction. And he said, don't ask why, don't ask how, simply do it and reap the benefit. That is what he says. And why do we do it? Because it heals. It is helpful in healing. When we implement it, we can, experience it our own self. And I should say that it created a very positive impact in me, that I am able to erase and I am able to, come over the past memories. I'm able to clean and I'm able to clear the unpleasant memories is my experience. And Hooponopono, he says, works in 4 areas of our life. Those are health. The previous slides are, again, we are not finished. The health, that is the physical, mental, and our emotional health. Then in relationships, in career and money. So 4 areas where Hooponopono works: health, all aspects, all the domains of our health, relationships, career, as well as in financial aspects. Hooponopono works wonders. How do we use this technique? Very simple, 4 statements. The first one being, I am sorry. That is healing yourself and taking 100% responsibility. For whatever happened in my life, I should say, I am sorry. That is repentance. Maybe it was not my fault, but I was in that time and space when it happened, right? Now, if it is the other person's problem, it also became my problem. Yeah, because I am part of the whole. I am also part of this person. So please forgive me. Seeking apology for the universe, from the universe, for making me present in that particular time and space. The universe decided that I had to be in that time and space, and I had been over there. So forgive me for, being in that time and space. Thank you, for giving me this knowledge of this Hooponopono technique that I can practice now. The power of gratitude.
And then last but not the least, I love you. So these 4 statements are the most powerful statements of the universe, he says. And the last one, especially, I love you, the most powerful statement of the universe. You know, so when we say to the divine, I love you, the universal energy, I love you. So he says, just keep on repeating. The subconscious mind does not understand. It just takes everything literally, as we saw one of the characteristics of the subconscious mind. So as we repeat this again and again, these 4 statements, some changes start happening within you. And that is what I realized. And I blindly said these 4 statements, whether I really meant it, probably even I didn't mean it. Even Joevitale said, without meaning anything, I kept on repeating these 4 statements and I started seeing the results. So that is how magical it is. So how to do it? You set an intention. Yes, I want to heal myself. That can be an intention. And repeat these 4 mantras. Morning, I do it 108 times, and evening also I do it 108 times without fail every day. So just as I said earlier, we take bath for our body with soap and water every day. This is a clearing and cleansing of our subconscious mind every day, because we keep on accumulating every day. We need to keep cleaning every day, is what he says. Now going further. So some of us may think like, I don't want to say sorry. Why should I say sorry? It's not my fault, or it's not my mistake. Yes, it's absolutely okay. But even if it is not my fault, we need to take 100% responsibility, for everything that is happening around. So if there is terrorism happening around, or if there is a rape happening around, or if there is a murder happening around, so what we need to ask, Dr. HEW LEN says what we need to ask is, what is going on within me? What is going on inside me that this person is behaving like this with me? That is what he says we need to ask this question. We need to ask. If somebody is bugging you, we need to ask this question. What is going on inside me that has caused this person to bug me? So this has got the deepest of meaning, and it took a lot of time for me to understand. At the surface level, I was not able to understand, but I went deeper and deeper into understanding how the subconscious functions and how the superconscious functions. And superconscious mind, he says, is actually the divine mind, the inspiration mind, which is timeless and boundless. There are no bounds for the superconscious mind. If we want to get there, we really need to say sorry, because subconsciously we are not aware of our mistakes, right? We are not even aware of, our conscious mind is not at all aware of our mistakes. So for that reason, we need to feel sorry. We need to repent. Unconsciously, we would have done some mistakes. We are not aware. In theosophy, we know the karma, right? So it is easy for us to understand. So I don't know what it is in me that has brought this into my life. So I am sorry. So even if you find that somebody is complaining of some pain, suppose say back pain, such a simple thing as a back pain or a headache, we need to immediately say these 4 statements, and we need to ask, what is going on inside me that this person is suffering this pain? And then the answer comes, okay, let us start healing now. So actually, we are not trying to even heal the other person. We are only healing the memory, the error in the memory of within ourselves. That is what we are healing. That is what even Dr. HEW LEN did. He did not try even to heal a single patient in that asylum. He healed the error files, the error memory inside him, within him, by virtue of which they got transformed. It happened like that. Transmutation happened. So that is what it is very important. And when we say, please forgive me, I am unconscious, I am not aware, but yet please forgive me. We are seeking this divine power. We are appealing to the divine creator to forgive us. Then thank you for helping resolve the situation in me. Thanks again to the universe and the divine power for resolving the situation for me. And then I love you, universe. I love you, divine power. So we can simply keep on telling these 4 statements again and again. It will become a part of our personality. And then repeat the 4 short phrases a few times. Or you can just say these 4 phrases. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
So it is so simple, but yet very profound. So this is what I also do every day. So in essence, how do we set zero limits and heal the world? So we should not even try to heal the world. In fact, we need to heal ourselves, because the world is in us and we are part of the world. So I am part of the whole. You are in me, I am in you. So by healing ourselves, the world heals itself. So this is the crux of what Zero Limits book says. Going further, clean, clean, clean the subconscious every day, he says. So how do we heal ourselves? By understanding I am you, you are me. That deep understanding, if we are able to imbibe in us, it will go a long way in helping us to heal ourselves. The next one. So again, taking 100% responsibility for our life, for everything, in and out. We take complete responsibility for everything that is happening in the universe. So again, hooponopono prayer. I am sorry. Please forgive me. I love you and thank you. So the Helen Keller beautifully says the best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. So many things in our life, they are not tangible, they are intangible. It can only be felt. So hooponopono can be felt, within. And when that change happens, it is simple. It is simply bliss. So this was an experience that I wanted to share with all of you. Getting into the zero limits, there is a power. So thank you so much for this opportunity, friends. Now over to the translation team. Gomti ji, wonderful. And straight away I will go to Manjusha ji. Please do the honors in Marathi. Thank you. Thank you, sir. पार्ट 2 मध्ये आपण आता स्लाइड 9 पासून सुरुवात करणार आहोत. होपोनोपोनोच्या तंत्रामध्ये 4 तत्वे त्यांनी दिलेली आहेत. एक आंतरिक वास्तव भौतिक बनते, त्याच्यानंतर नकारात्मक विचार हे नकारात्मक वास्तव निर्माण करतात. मी तू आहेस आणि तू मी आहेस, म्हणजेच आपण संपूर्ण विश्वाचा एक भाग आहोत हे याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि त्याच्यानंतर 100% तुम्ही जबाबदारी घ्या, कारण की परत आपण पूर्ण या विश्वाचा एक भाग आहोत, संपूर्णाचा एक भाग आहोत, असं या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. ही जी स्लाइड आहे ही महत्वाची स्लाइड आहे आणि हे महत्वाच्या होपोनोपोच्या तत्वांबद्दल आपल्याला सांगते. यामध्ये जोविटाले यांनी म्हटलेलं आहे की माझ्या भूतकाळातील क्लेशकारक बालपणीच्या आठवणींवर मात करण्यासाठी मी आतापर्यंत तंत्र आणि अनेक साधने शिकत होतो आणि शोधत होतो. या अर्थाने माझ्यासाठी हे प्रकटीकरण होते, पण त्याचा कुठलाच उपयोग झाला नाही. मी पुष्टीकरण, व्हिज्युअलायझेशन, हेतू निश्चित करणे, शरीर जागरूक पद्धती, अंतिम परिणाम अनुभवणे, स्क्रिप्टिंग, भावनिक स्वातंत्र्य तंत्र, बरेच काही त्यांनी प्रयत्न केले, पण मला जे आढळले ते नेहमी काम करीत नाही. लवकरच मला कळले की या साधनांच्या स्वतःच्या एक मर्यादा आहेत. पण मला लवकरच समजले, म्हणजे या पुस्तकाद्वारे जेव्हा त्यांनी हे पुस्तक लिहिलं, की मला स्वतःच्या आतल्या एका जागेवर विश्वास ठेवायचा आहे जिथे शून्य मर्यादा आहे. त्यामुळे हे पुस्तक माझ्या हृदयाच्या खूप जवळ आहे. या 4 तत्वांमुळे मला स्वतःला आणि इतरांना चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास मदत झाली. शारीरिक, मानसिक, भावनिक दृष्ट्या आपण सर्व भिन्न असू शकतो, म्हणजे वेगळे असू शकतो, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्रात आपण सर्व एकच आहोत. आणि यामुळे मला अधिक क्षमाशील बनण्यास आणि माझ्या नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यास मदत झाली. माझ्या आयुष्यासाठी 100% जबाबदारी घेणे ही या तंत्राची आवश्यकता आहे. आणि हे मला समजले की ही माझी चूक नसली तरी जेव्हा गैरवर्तन झाले, म्हणजे चुकीचे आपण काही वागलो, तर तेव्हा मी त्या वेळेत आणि त्या जागेत होतो आणि म्हणून मला स्वतःला बरे करण्याची, म्हणजेच 100% जबाबदारी ही घ्यावी लागेल, स्वतःलाच घ्यावी लागेल. माझ्यासाठी ही सर्वात मोठी एक शिकवण होती. स्लाइड नंबर 10 मध्ये सांगितलेलं आहे की हवाईयन साधन हे कसे वापरायचे, होपोनोपोनो कसं वापरायचं. मग यामध्ये म्हटलेलं आहे की व्हॉट,
व्हॉट म्हणजे काय, तर त्या एक व्हॉट शब्द व्हॉट म्हणजे काय, तर यामध्ये शब्दांमध्ये ऊर्जा आणि वारंवारता असते, 100% जबाबदारी असते आणि तार्किक नसते. व्हाय या ह्याच्यामध्ये कशासाठी हे यूज करायचं, तर उपचार करण्यासाठी, सकारात्मक प्रभाव निर्माण करण्यासाठी, तसंच आरोग्य, मग ते शारीरिक असो, मानसिक असो की भावनिक असो, त्याच्यानंतर नातेसंबंध, करिअर आणि पैसा, या सगळ्या गोष्टींसाठी हे आपण तंत्र वापरतो. त्याच्यानंतर हे आता कसे वापरायचे, तर पहिलं मला माफ करा, म्हणजे स्वतःला जर बरे करायचे असेल आणि ती स्वतःला जबाबदारी घ्यावी लागेल, 100% जबाबदारी ही स्वतःची असेल, तर तेव्हा आपण म्हणू मला माफ करा. त्याच्यानंतर कृपया मला माफ करा, म्हणजे आपण विश्वाकडून माफी मागतो आहे. धन्यवाद ही आपण म्हणतो आहे की एक थँकलेस आपण जे म्हणतो की आपण थँक्स म्हणून राहिलेलं आहे, ती कृतज्ञतेची एक शक्ती अफाट असते, जी आपण विश्वाला सगळ्यांना थँक्स म्हणत असतो, धन्यवाद देत असतो. मी तुझ्यावर प्रेम करतो, मग हे तुझ्यावर म्हणजेच काय, तर स्वतःवर आणि पूर्ण विश्वावर प्रेम करतो. या कंटिन्युअस गोष्टी सांगाव्या लागतात या तंत्रामध्ये. सर्व ऊर्जा या एका विशिष्ट वारंवारतेने कंपन करते. जादुई परिणाम पाहण्यासाठी आम्हाला स्वतःला उच्च वारंवारतेनुसार संरेखित करणे आवश्यक आहे. आकर्षणाचा नियम म्हणतो, का विचारू नका, कसे विचारू नका, फक्त ते करत राहा. यात कोणतेही तर्क नाही, फक्त जादू आहे, म्हणजे मॅजिक आहे. आणि मी म्हणायलाच पाहिजे की मी दररोज सुप्त मनातून माझी नकारात्मक ऊर्जा साफ करण्याच्याच मार्गावर आहे. आणि डॉक्टर ह्यूलेन म्हणतात की आमचे मुख्य काम आहे तर साफ करणे, क्लिनिंग करणे. हॉवआयएनच्या आपल्या जीवनातील 4 क्षेत्रांमध्ये काम करते. एक तर आरोग्य, नातेसंबंध, करिअर आणि पैसा, या 4 क्षेत्रामध्ये हॉवआयएनचं तंत्र काम करते. आणि आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे उपचार ही एक साधी परंतु गहन प्रार्थना आहे, ज्यामध्ये 4 विधाने आहेत. ती म्हणजे मला माफ करा, ज्यामध्ये पश्चाताप येतो. कृपया मला क्षमा करा, त्याच्यामध्ये आपण क्षमा मागतो. धन्यवाद, चांगल्या आणि वाईट प्रत्येक गोष्टींबद्दल कृतज्ञता येते. आणि मी तुझ्यावर प्रेम करतो, म्हणजेच विश्व आपल्यावर प्रेम करतो आणि आपण त्या विश्वावर प्रेम करत असतो. स्लाइड नंबर 11 मध्ये मला हॉवआयएनच्या बाबतीत मला माहित नाही की माझ्यात असे काय आहे ज्याने हे माझ्या आयुष्यात आणले. मला माफ करा, कृपया मला माफ करा, माझ्यातील या परिस्थितीचे निराकरण करण्यात मला केल्याबद्दल धन्यवाद. मी तुझ्यावर प्रेम करतो. ह्या सगळ्या गोष्टींचा थोडक्यात म्हणजेच काय, तर आपण शून्य मर्यादा कशी सेट करू आणि जगाला बरे कसे करू, तर कसे करणार, तर पहिले स्वतःला बरे करून. स्लाइड नंबर 12 मध्ये आपण स्वतःला कसे बरे करू शकतो, तर मी तू आहेस आणि तू मी आहेस. 100% जबाबदारी घ्या तुमच्या आयुष्याची. आणि जरी आपल्यापैकी बहुतेक जण म्हणू शकतील की मी ही कोणतीही चूक केली नाही, तर मी सॉरी का म्हणायचे, हे जाणून घेणे आपल्याला महत्वाचे आहे की आपण आधी पाहिल्याप्रमाणे काय घडत आहे याची जाणीव मनाला नसते. आपल्या जीवनात जे घडत आहे त्यापैकी फक्त 5% ते जाणतात. आणि आपण काय घडत आहे आणि अवचेतन मध्ये काय घडत आहे याबद्दल आपल्याला माहित नसल्यामुळे त्या पलीकडे आपण दुसरे काही समजूही शकत नाही. आमच्यासाठी समस्या असल्यास सोडवल्याबद्दल आम्ही आधीच विश्वाचे आभार मानू शकतो. केवळ या 4 विधानांची पुष्कळ वचनबद्धतेने पुनरावृत्ती केल्याने आपण अवचेतनातील अप्रिय आठवणी साफ होतात आणि त्या स्वच्छ होत राहतात, ज्यामुळे दैवी प्रेरणा प्रवेशाचा एक मार्ग तयार होतो. ज्याप्रमाणे डॉक्टर ह्यूलेनने मानसिक रुग्णालयात गुन्हेगारांना बरे केले, त्याने त्यांना स्वतःहून बरे केले नाही, तर त्याने ओळखले की तो त्यांचा एक भाग आहे आणि त्याने स्वतःला बरे करण्यास सुरुवात केली, ज्यामुळे ते बरे झाले. त्यामुळे रोज स्वच्छ आणि स्वच्छ करा, सुप्त मन स्वच्छ करत राहा. स्लाइड नंबर 13 मध्ये म्हटलेलं आहे की तुम्ही माझ्यामध्ये आहात आणि मी तुमच्यामध्ये आहे, हे समजून घेणे सगळ्यात महत्वाचे आहे, जे बरे होण्यास सक्षम करते. स्लाइड नंबर 14 मध्ये म्हटलेलं आहे
की मी माझ्या जीवनासाठी 100% जबाबदार आहे, हे पुन्हा पुन्हा सांगणे महत्वाचे आहे. स्लाइड नंबर 15 मध्ये म्हटलेलं आहे की मनापासून 4 विधाने करा. कोणती? तर मला माफ करा, कृपया मला माफ करा, मी तुझ्यावर प्रेम करतो आणि धन्यवाद. या 4 विधाने हे परत परत पुनरावृत्ती याची करणं जरुरी आहे. स्लाइड नंबर 16 जी आता शेवटची स्लाइड आहे, त्यामध्ये हेलन केलरनी एक विधान दिलेलं आहे. त्यांनी म्हटलेलं आहे की जगातील सर्वोत्तम आणि सुंदर गोष्टी पाहिल्या जाऊ शकत नाहीत किंवा स्पर्शही करता येत नाहीत, पण ते मनापासून अनुभवले पाहिजे. आणि म्हणूनच स्वच्छता करत राहा, दररोज बरे होत राहा. कीप क्लिनिंग, कीप हिलिंग एव्हरी डे. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. और हर्षवर्धन जी, बिना समय गवाते हुए मैं आपसे कहूंगा कि आप आरंभ करें. धन्यवाद. धन्यवाद. और शुरू कर रहा हूं मैं. जी 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 जो 8 थी जी, फिर उसका अर्थ जान ले सबसे पहले. जी जी. स्लाइड 8 में होपोनोपोनो द्वारा 4 सिद्धांतों से स्वयं शोध. आंतरिक सत्यता शारीरिक स्वरूप बन जाती है. नकारात्मक विचारों से नकारात्मक हकीकतें या सत्यता उजागर होती है या सृजन होता है. मैं आप हूं और आप ही मैं हूं, क्योंकि हम पूर्णता का एक हिस्सा है. और चौथा है 100% जवाबदारी होनी चाहिए, यानी हम पूर्णता की एक इकाई है. अब आएंगे स्लाइड 9 पर, जिसमें उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई है जिसको काफी ब्यौरा दिया, और इस ब्यौरे में हम इसे समझे कि इसमें होपोनोपोनो के सिद्धांतों की चर्चा है. डॉक्टर लीन बताते हैं, मैं इसी तकनीक और साधनों की तलाश में था जिससे मैं अपनी बाल्यावस्था की हमलावर स्मृतियों से पीछा छुड़ा सकूं. अपने खुद की बात बताते हैं, बचपन की, क्योंकि बचपन में एक नजदीकी रिश्तेदार ने जातीयता का शिकार मुझे बनाया था, और मैंने फिर बाद में कई पद्धतियों का सहारा लिया जिसमें हकारात्मक अभिगम, मानसिक दृश्यावली, इरादे स्थापित करना, शारीरिक अवधान पद्धतियां, और अंतिम चरण स्वरूप उसका परिणाम पाना और लिखकर जताने की प्रक्रियाएं थी. लेकिन कुछ संतोष नहीं हुआ. तुरंत पता चला कि ये सभी साधन मर्यादित हैं, उनकी भी मर्यादाएं हैं. इन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे शक्ति प्राप्त होती थी, लेकिन हकीकत कुछ और थी. इसी किताब से तुरंत पता चला कि मेरे अंदर जो स्थान है, जिसकी शून्य सीमाएं हैं, उसका विश्वास करना होगा. इसलिए यह पुस्तक मेरे हृदय के करीब है. इन चारों सिद्धांतों ने मुझे अपने आप को समझने में बहुत ही मदद की है, और दूसरों को भी समझने में मदद की है. शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वरूप से हम अलग या पृथक हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम सब एक हैं. इसलिए मुझे इससे ज्यादा यह मदद मिली कि मैं ज्यादातर माफी दे हुआ और मेरी नकारात्मक ऊर्जा की नक्काशी करता रहा. इस पद्धति में 100% जवाबदेही मेरे जीवन के लिए जरूरी है, और मुझे यह ज्ञात हुआ कि भले ही मेरा कोई अपराध ना हो, मैं उसी समय और उसी स्पेस में हूं जब यह अपराध हुआ था. इसलिए मेरी भी 100% जवाबदारी होती थी, ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं. यह मेरे लिए सबसे बड़ी सीख थी. अभी स्लाइड 10 में जो उन्होंने बताया उसको देखिए. सभी ऊर्जा एक निश्चित स्तर से आंदोलित होती है. हमारे लिए यह जरूरी है कि हम उसी उच्च स्तरीय आंदोलनों तक ऊपर उठे. आकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दर्शाता है कि ऐसा क्यों यह मत पूछो, और ऐसा कैसे यह भी मत पूछो. बस सिर्फ करते रहो. उसमें तर्क नहीं, उसमें जादू है. और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं हर रोज अपने अचेतन में से मेरी नकारात्मक ऊर्जा को हटाते हुए शुद्ध होता रहा. होपोनोपोनो इसी तरह हमारी जिंदगी में 4 क्षेत्रों में कार्य करता है.
तंदुरुस्ती, पारस्परिक संबंध, व्यवसायिक कारकिर्दी और पैसा। इसमें से भी ज्यादा रसिक बात यह है कि इसका हीलिंग सादगीपूर्ण और फिर भी सूक्ष्म एवं गहन है, जिसमें 4 छोटे विधान है, जिसके बारे में डॉक्टर ह्यू लेन कहते हैं कि ये 4 विधान विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है। यह विधान है आई एम सॉरी, मुझे खेद है, पछतावा है, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कीजिए यानी माफी, थैंक यू, आपका आभारी हूं, अच्छा या बुरा सभी के लिए आभारी हूं, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, यानी ब्रह्मांड विश्व हमें चाहता है और हम उसी ब्रह्मांड को भी चाहते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उसकी बात यहाँ पर है। फिर स्लाइड 11 में, इसके बावजूद हम में से कई लोग यह कहेंगे कि मैंने तो कोई गुनाह या भूल की ही नहीं, तो फिर मुझे सॉरी क्यों कहना चाहिए। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे जागरूक मन को कोई अंदाजा है ही नहीं कि आगे क्या हो गया है। उसे तो सिर्फ हमारे जीवन की 5% बातों को ही पता होती है। इसके अलावा इसके परे हम कुछ भी जान नहीं पाते, क्योंकि अचेतन में जो कुछ भी घटित होता रहता है उसके बारे में हम संपूर्णतः अनजान होते हैं। अगर हमारे कोई भी प्रश्न का हल होता है तो हम वैश्विक चेतना को पहले से ही आभार व्यक्त कर लें। सिर्फ ये 4 सूत्रों का बारी बारी रटन करने से ही हम विश्वास पूर्वक और ध्येय पूर्वक अचेतन में से दुखद स्मृतियों को साफ कर शुद्ध हो सकते हैं, ताकि दैवी प्रेरणा का स्रोत उसमें प्रवाहित हो सके। स्लाइड है 12। हम दूसरों को स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकते। जरूरी है कि हमारे स्तर में आने वाली दोष युक्त स्मृतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, उन्हें तंदुरुस्त बनाने की जरूरत है। जिस तरह से डॉक्टर ह्यू लेन ने मानसिक उपचार अस्पताल में अपराधियों को तंदुरुस्त बनाया, जो किया वो उन्होंने स्वतः ही नहीं किया, उन्होंने पहचान लिया कि वे उनमें से ही एक है और स्वयं को उसी सद्गुण से दुरुस्त किया जिससे वे सभी तंदुरुस्त हो। शुद्ध किया कीजिए, हर रोज अचेतन को शुद्ध किया कीजिए। स्लाइड 13 में है, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं। यही बात हीलिंग होने को साथ देती है। स्लाइड 14 में बताया है कि फिर से बार बार दोहराना महत्वपूर्ण है कि मैं खुद अपने जीवन के लिए 100% जवाबदेही हूं। स्लाइड 15 में है, इन चारों छोटे से वाक्यों का स्मरण या रटन किया कीजिए, चलते हुए भी या किसी से बात करते हुए भी। कहते हैं कि 108 बार इसका रटन करना जरूरी है। हूपोनोपोनो हमेशा जहां कहीं भी हो। स्लाइड 16 में हेलर केलर की बात है, कहा है उन्होंने कि चिंतन की शुद्ध होते रहिए, हर रोज स्वास्थ्य प्रदान होता रहे। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर उजागर की है। जो म्यूजिकल बात है, इन सूत्रों को सुनने की काफी मजा आता है, जहां पर म्यूजिक के साथ इन चारों छोटे छोटे वाक्यों को गाए हुए संगीत के साथ एक तालबद्ध तरीके से जब पेश होते हैं, तब उसके आंदोलन में हम इतना सुख पाते हैं और औरों को भी सुख देते हैं। तो मुझे ये अनुभूति है। बहुत ही आपने ये विषय चुना और जैसे ही मुझे बताया गया तरल जी ने, तो मेरी भावनाओं को मैं रोक नहीं पाया, अर्पित कर रहा हूँ। मेरी भावना को अच्छा, अर्पित कर रहा हूँ कि आपने ये विषय लिया और सही लाइनों में वक्त। धन्यवाद हर्षद भाई। हर्षवर्धन भाई, एक चीज बाकी है, इसलिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सो सॉरी। गोमती जी, आप वो 4 या 5 मिनट का कुछ एक्सरसाइज कराना चाहती थी, तो सब हाजिर हैं। अगर सारे लोग चाहें तो मेरे ख्याल से आप एक तरीका बताना चाहती हैं, प्रैक्टिकल किस तरह से किया जाता है। तो जितने भी उपस्थित लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, कहीं ना जाएं और ध्यान से सुने। Yeah, it will just take about 4-5 minutes. I have also become a certified Ho'oponopono healer.
मैंने वो कोर्स कर लिया and I'm imparting this to all my known in my known circles, my relatives, my friends. So this is a conversational hooponopono. So we will just do it, just experience it, sit comfortably. आप लोगों का ना वीडियो ऑन रखना, but ऑडियो खाली बंद रखना. Just switch off your audio so that there is no disturbance, but keep your video open. So sit comfortably, close your eyes until I say please don't open your eyes, and repeat loudly after me whatever I say. And if in case tears roll by your cheeks, don't suppress them at all. If you feel like, let the tears come if they are coming. Okay, so we will repeat this sentence. Repeat after me. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. One more time. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now think about your mother. Imagine that your mother is standing in front of you and you are holding her hand in a very gentle way. Look at her eyes. She is having a smile on her face. So as you are smiling with her, look at her eyes and repeat after me. Dear Mom, I'm so sorry that I have caused you hurt many times. I'm so sorry that I have judged you wrongly on many occasions. I'm so sorry, dear Mom, that I have not spent enough time with you. Please forgive me, Mom, for I have not been able to understand you. I did not express my love to you. Please forgive me for being disrespectful towards you at times. Thank you so much, Mom, for giving me unconditional love in spite of the fact that I did not show love to you. Thank you so much, Mom, for giving me unconditional love in spite of not loving myself. Thank you so much for all the sacrifices that you have made for me. I must have not told you this, Mom, many times, but today I want to tell you that I love you so much, Mom. Be with your feeling. Keep your eyes closed. Now think about your dad. Imagine he is in front of you. And repeat loudly after me. My dear Dad, look into his eyes and say, I'm so sorry, for I have always felt that you did not spend enough time with me. I'm so sorry for feeling that you were all the time busy in your work, not giving enough time for your family. I'm so sorry, Dad, for hurting you many times. I'm so sorry for not understanding your feelings. Please forgive me, Dad, for I have not showered enough love towards you. I'm extremely sorry for that. Thank you so much, Dad,
for all the sacrifices that you have made for us, for providing for us, for working non-stop for us. Thank you so much for bringing us up, for taking care of our family. I want to tell you, Dad, today I want to tell you that I love you so much. I love you from the bottom of my heart. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Be with your feeling. See in your mind's eye how your dad is responding to you. Now think about a person in your life who you think has hurt you the most. And take the name of this person loudly and repeat after me. I am so sorry. Take the name of this person for blaming it entirely on you for whatever happened between the two of us. I'm so sorry for not taking responsibility for my part. Please forgive me for getting into so much negativity as far as our relationship is concerned. Thank you so much for being there and for giving me this experience, because this is going to enable me to grow. I want to tell you that I want to let go of all the negativity between us. And today I want to tell you that I love you so much. I am so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now take your name loudly, your own name. I am so sorry. Take your name. That I have been the one who has criticized you the most. I have been the one who has disconnected from you the most. Please forgive me for being so harsh on you. Thank you so much for making me realize that I am the most close to me. Thank you so much for making me connected now to my own self. Thank you so much for this reconnection. I want to tell you that whether anyone loves me or not, whether the world loves me or not, I promise to you that from now on, I will love you. No matter how you are, I love you the most. I am so sorry, my dear. Take your name. Please forgive me. Thank you. I love you. Take both your hands and cross it across your shoulder and hug yourself. Take your head towards one side of the shoulder and say to yourself, I love you so much. Weren't you craving for this love? When was the last time you felt so much love for your own self?
Say, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I love you deeply and completely. Slowly bring your hands down. Open your eyes. Take your hands together. Rub it vigorously. Generate the heat energy. And apply this heat on your eyes and roll your palms over your face. How do you feel? Feel mind blowing. Mind blowing. Okay. And it is already 8:10. Thank you so much, Gomti ji. Yeah. I think after this exercise, जिसे भी जो कुछ बोलना हो वो बोल सकते हैं. एक मिनट लें. काफी लोग बोलना चाहते होंगे. और यदि कोई प्रश्न है तो वो पहले पूछें. चैट बॉक्स में मैं देखता हूँ किसी ने लिखा हो प्रश्न को. I don't think so. शैलेंद्रनाथ दत्ता पूछ रहे हैं, is hooponopono related to theosophy in any serious way? My second query is what the doctor / author is conscious about the theosophical concept by healing self and / the patient. Yeah, I think I have replied in the chat box itself that I am not aware of whether there is a theosophy connection. But I felt that I resonated with the subject because it was so closely connected to theosophy. Yeah. So the ideologies. Anyone else? Like I one like line contribution. Yeah, Vimal ji. I like to just Yeah, answer the Vimal. question. So the way I look at it, how it's connected to theosophy is, if you observe the 4 sentences that you are asked to say, those 4 sentences are not connected to each other. So our lower mind, which works in the rational way, cannot see a connection between the 4 sentences. That way, the lower mind stops working, and then we are able to, suppress that lower mind without any effort. And then when we are doing these 4 sentences, they are full of emotions. So there we are tackling our emotional self. Now, what theosophy says is that the process of evolution is the development of our kama-manasic body. So this is a technique of healing, and healing is essential for each of us. That is why such a program is very necessary, because every single one of us has been hurt in our life. There is no one who is not hurt. And that hurt and that pain and that anger we carry with us. And if we don't heal that, we are harming ourselves. So this is very important. And I don't know, I've done this technique many times and I keep forgetting and I don't do it regularly. So I think this is a good push for me to try more regularly. Actually, the biggest thing which I think goes with theosophy, I'm a very small learner, but it's very surprising that in Varanasi convention, when I prepared a theater drama on brotherhood, my first sentence was, I made the entry from the crowd, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है, तू मुझ में हूँ, मैं तुझ में है. This was my first sentence, and I think many of you have seen it. Everybody was, and I now after going through this exercise, whatever you've done practically, I think subconsciously I did at that time. Even Shindeji was there. I did it with very different tonation because I am a theater actor. So I used to look into it. Tu mujh mein hai, main tujh mein hu. First I asked the question. Then I used to give, tu mujh mein hai, main tujh mein hu, like an answer. So many different emotions I created out of these 2 lines. I never knew that this has got so deep meaning, but it was from brotherhood. Whatever the 7 or 8 sessions have happened during those days, I consolidated it all together into a play, in which I think all these things which are talked here were there. So practically, I am seeing it connecting with theosophy. Yes, sir. Anyone else? Shindeji? Yeah, theosophy is in everything. In everything is endowed with theosophy, actually. So nothing is out of theosophy.
So I must congratulate Gomathi. Very nicely you have explained. Self-healing is the best healing. No medicine is required. Self-healing, wherever you focus your attention, energy flows there. And you can definitely realize this when you become very silent. That silence itself heals you, purifies you and heals you, and your mind is concentrated. And when you are focused, that energy flows towards that where you are focused. This is what Buddha has taught, and most of the teaching of Buddha is included in theosophy. Buddha says compassion is a word with no boundaries. So compassion is action, he says. It is a word with no boundaries. So here again, you said any word, sorry or thanks, all these have really potential in them. They are limitless actually. They have power to penetrate into the human consciousness, because human consciousness is sensitive. So these words penetrate into the human consciousness and it stirs. And that brings change. And the very principle of evolution is from within outside. From within outside. So as you said, from inner reality to outer reality. Very corrected. And that is all included in the theosophy. And whatever meditation you took, this one. This is what Geoffrey Hudson has told, guiding meditation. I am not this, I am not that, like this, you can go on saying and feel what happens. This is very good experience. I must congratulate Gomathi. You are nothing but a theosophist. So you are not out of a theosophy at all. And I also thanks to Manjusha, translated in Marathi, and Harshavadan said he is also wonderful lecturer and explained nicely. Thank you for the all slides also very self-explanatory. Thank you, TARAL, arranging such kind of lecture. You yourself are really a healer. Thank you, TARAL जी, sir. मैं कुछ कहना चाहती हूँ. TARAल जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ. हाँ, ये बहुत इंस्पायरिंग था. तो मैंने किताब पढ़ी थी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. और सबकॉन्शियस माइंड उस समय वर्क करता है जब हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत से सुषुप्ति की अवस्था के बीच में होते हैं. तो सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई लॉजिक नहीं होती. जो भी विचार हम उसको देते हैं वो एज इट इज मटेरियलाइज होता है. एंड एवरी सिंगल डे आई स्पीक 3 prayers. I lovingly forgive and forget everyone who has ever offended me. And God forgives me. If I have ever offended anyone, I am thankful. और सेकेंड, उन्होंने बताया कि हम ही ये यूनिवर्स हैं, हम में ही यूनिवर्स है, तो हम अपने को हील करेंगे तो यूनिवर्स को हील करेंगे. तो हमको, मैं एवरी सिंगल डे बोलती हूँ, आई रेस्ट एंड रिलैक्स इन द लव ऑफ गॉड. एज गॉड लव्स मी, ही हील्स माय माइंड एंड बॉडी. आई एम थैंकफुल. और एवरी सिंगल डे 11 लोगों को लिखकर ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ. अब जब समय नहीं होता तो बोलकर, फ्रॉम बिगिनिंग टू नाइट. तो ये, और जो उन्होंने कहा कि ये क्या थियोसॉफी से रिलेटेड है, डोरा कुंज और एरिक ने एक आर्टिकल लिखा था, रिजेंटमेंट इज, जो मनोमालिन्य है वो एक विषाक्त अंतरधारा है. पॉइजनस, रिजेंटमेंट इज अ पॉइजनस अंडर करंट. तो इस पॉइजनस अंडर करंट के कारण ही हम बीमार पड़ते हैं. और जब उसको काटने के लिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में एवरी सिंगल डे पॉजिटिव थॉट इंस्टिल करेंगे तो हम ही नहीं हील होंगे, ये यूनिवर्स के और लोग भी हील होंगे. ये शेयर करना चाहती थी. बहुत बहुत धन्यवाद गोमती जी को और सब. बहुत ही शानदार. जी शर्मा जी, और मेरे ख्याल से हसमुख भाई और जसुबेन कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद हम प्रेयर की ओर जाएंगे. The subject has been dealt with so profuse depth that it really touches our hearts. And I would like to share my experience that by self-healing yourself, you are paving a way for your own self to develop the hidden potentials latent in man. The third aspect of our society's objective, to develop the unexplained laws of nature
and potentials latent in man. And when the first time when Mirandala came to our convention, she, at the last moment, she held my hand because she was very fragile. She held my hand, took my hand and said, "Husband, we are going to sing today." Out of the blue, from nowhere, he said, "You are going to sing today." And the first song I gave was Jyota Se Jyota Jagat Ke Chalo. So that inspired. So this inspiration is coming everywhere. Today's talk is giving so much inspiration to so many people. Yes, sir. So let us keep it up. And one another thing, we should be totally, absolutely aware that not a single word should be uttered from our mouth which is negative. You will say, "I'm confused." No, no confusion. "Oh, I'm distressed." No distress. All positive, most positive thoughts. And also that could be a situation where you are distressed. But at the same time, when you are distressed, you say, "Yes, I'll be more alert now to come over the storm." Thank you. Thank you, Asung भाई. That was बहुत ही इमोशनली आपने कहा और हमें उतना असर कर गया। और समय बहुत हो चुका है। मैं भी इंदौर में हूँ और जो शिंदे जी ने बात कही, जो गोमती जी ने आज ये पूरा एक्सरसाइज किया, हर्षवर्धन जी बहुत बहुत धन्यवाद, मंजूषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातों से मैं वही ब्रदरहुड वाला नाटक उज्जैन में करने वाला हूँ, लेकिन उसमें अब 100% काफ़ी सारे नए विषय आज के उससे जुड़ेंगे और आप सब लोगों ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया उससे भी जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनविजिबली हेल्प करने के लिए। थैंक यू अतुल भाई। કેશવરબેન શિવમનું ગાન કરાવશે અને ત્યારબાદ આપણે સભાનું સમાપન કરીશું। કેશવરબેન, આપનું સ્વાગત છે। हाँ केशवरबेन वो आ रहे हैं, तब तक प्रेमलता जी कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी, मैं उन्हें शायद नजरअंदाज कर गया, चैट बॉक्स में लिखकर चली गई। हाँ केशवरबेन नहीं है शायद। केशवरबेन नो, शी इज नॉट देयर। अर्चना, I'm there, I'm here. अच्छा, ओके प्लीज गो अहेड। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं, न कर्णं न जिह्वा न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संनो न वै पंच वायु, न वा सप्त धातु न वा पंच कोशः, न वाक्पाणि पादौ न चौपस्थपायुः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मत्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्द रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानंद रूप शिवोहम 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 चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। थैंक यू एवरीवन। और समय हो चुका है तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन एक गुजारिश के साथ कि अगले कम से कम 4 बार ऐसे ही इंटरेस्टिंग विषय रहेंगे, तो जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका आभार, एक बार फिर किनो स्पीकर का आभार और सभी लोग जो उपस्थित थे सभी का आभार। धन्यवाद। आप सबकी आज्ञा से बाय बाय।